केबल डायरेक्टली डाल दो, but that is fine from one computer to another. Is it possible कि आप एक कंप्यूटर को और एक वायर ऐसे डाल दो और एक कंप्यूटर one more wire you put? Is this practical, guys? No, isn't it? Do you agree, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So obviously, connecting two computers, that's fine, but n number of computers, so you need a device. ऐसा कोई device आपको जरूरत पड़ेगा जो आपको connect करके देगा. It is similar like आपके घर पे आपने देखा होगा extension board है या you have a spike guard, isn't it? You need more connections of power supply. So what you do is एक ही power supply में आप connect करते हो, you have spike guard which have n number of different slot, isn't it? तो आप एक से क्या करते हो? Charging कर रहे हो. One is you have your tablet charging, other is you have your laptop, isn't it? Similarly, consider कीजिए कि ये जैसा आपका स्पाइक गार्ड है वैसे ही है ये, बट द डिफरेंस हियर इज इसके पास बहुत सारे फंक्शनैलिटी है. तो ये आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है. क्लियर? Yes. एनी डाउट टिल हियर? दिमाग में अगर है कि स्विच राउटिंग करता है, प्लीज उसको साइड में रखिए. स्विच इज नॉट डूइंग एनी राउटिंग. Switch is only switching. That means connecting different computers and making it situated at one place. This point is clear. First, That means it won't have its own IP address. no, there is no IP address. Any other doubt? Guys, बहुत अच्छा opportunity है. You're online. You are hidden behind. You don't have any. You don't have to think. हाँ पूछो तो क्या लगेगा? Nothing. Whatever question, quickly ask. Perfect. Shall I proceed? Yes, ma'am. Perfect. आपका इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्प्स टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइस. ठीक है. अब देखिए एक क्वेश्चन आया था कि क्या इसको आईपी एड्रेस है या नहीं. तो आंसर है कि ये डिवाइस को कोई आईपी एड्रेस नहीं है. यू हैव फास्ट इथरनेट 0/0, मतलब बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स रहेंगे. जस्ट कनेक्ट कर दो और अपने आप वो अगर पावर ऑफ मोड में है वो ऑन मोड में होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े सेकेंड्स के बाद. क्लियर है गाइस? Obviously main power supply तो आपको देना होगा, but you don't have to allocate the IP address and make it up and everything. Perfect. Next क्या है? What is next? As it is a layer 2 technology, guys, so IP address तो नहीं है, but इसका identity तो होना चाहिए. So it uses what? MAC address. इसको IP address कुछ नहीं समझता guys. अगर आपने 192.168.10 डॉट सामने रखा, switch बोलेगा अरे ये कौन है? I don't know this person, right? So what you have to do is it only understands the MAC address. Clear? It only understands the MAC address. So whenever computer communicates, perfect. Whenever, yes, it is alphanumeric, hexadecimal. Whenever computer communicates, उसके पास तो IP address होगा. ठीक है, 192.168.10.3 को पहुंचाना है 192.168.10.5 तक पहुंचाना है. 4567 4567 7 तक पहुंचाना. I want to send my packet from 10.3 to 10.7. So it will reach to your switch, which will say that, hey, I don't understand this IP address. Okay, so it will convert. बीच में क्या होगा? एक ARP होगा, protocol. जो क्या करेगा, guys? It will convert your IP address to MAC. Okay. So fine. यहाँ पर वो आ जाएगा. And when it will come here, what it will do is, it will have an ARP table जिसमें वो check करेगा. Okay. It is coming to specific port, that is 0/0. क्या इस पोर्ट का कोई मैक एड्रेस है? ये डिवाइस जो कनेक्टेड है क्या कोई मैपिंग है? ओके, ठीक है. So we'll check that. Slowly and gradually we will learn it. Give me a moment. Time being, just try to understand these are connected and it is only identified with MAC address. Clear? Yes, ma'am. Now, second important point. By default, there is only one broadcast domain. Very, very important. ये technically, you have to be very strong with this, that by default, switch is having, or it falls under one broadcast domain.
इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of it? Like for example, you all are in one broadcast domain. That means if I'm talking to Tanmay, everyone can hear it, isn't it? Right, guys? Everyone can hear it. I'll repeat. It falls in one broadcast domain. What is the meaning of it? If I have a switch and if I n number of different ports connected to it, and consider these ports are here, port number 1, port number 2, 3, 4, and computers are connected to this. I want to talk from PC1, this is PC2, PC3, PC4, मुझे 4 से बात करना है, but 2 and 3 can also hear. Are you getting me? Yes, ma'am. Imagine कीजिए कि आप एक कॉरिडोर में खड़े हो and just imagine your college corridor, you're calling someone like Jaskiran is calling Aditya. So everyone can hear it, right? Why? Because आप open space पे हो. Perfect. अगर आपको personally बात करना है, you will call and do it, isn't it? So by default, switch is falling in one broadcast domain. Okay? And router जो है आपका, okay? Router जो है, it helps you out to divide the whole network into different broadcast domain. Clear? मतलब जैसे आपने router connect कर दिया, उसका मतलब क्या है? It will help you out to differentiate your broadcast domain. मतलब एक network से दूसरे network को बात करने के लिए help देगा. Clear? Now let me check few questions coming in. Several channels in a single set-top box, like, right? We can use routers, so why to use switch? Yes, Sadiq, you're right. We can use routers, right? We can use routers also to connect different devices. तो आपको switch क्यों use करना पड़ता है? The question is right. Switch has n number of different ports. ये देखिए. देखो, बहुत सारे comparison है. देखिए, मैं आपको बताती हूँ. Switch and router comparison. एक बार quick देख लेते हैं. Let me check if points are correct here. See, someone has asked me question. जिसने पूछा है सादिक. ठीक है? तो हम quickly एक बार देख लेते हैं. So the main objective, ये देखिए, the main objective. Guys, 2 minutes. Let me close this epic pen. Okay. Where was I here? So question is came that why we were at switch. हम switch पे आते हैं. But आपको एक question आया. The main objective of the router is to connect various network, not various device. समझ रहे हो आप? Okay? अगर आपको 4-5 डिवाइस कनेक्ट करना है तो आप स्विच यूज कीजिए. राउटर आपको 4-5 डिवाइस कनेक्ट करके नहीं देगा. राउटर के पास लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं. आर यू गेटिंग मी? Everyone? Yes, ma'am. Yes. Perfect. So it is similar like अगर आपको जैसे मैंने बताया स्पाइक गार्ड है, आपके पास लिमिटेड पोर्ट्स है 1, 2, 3 and 4. आप चाहते हो कि आपके पास 10 और डिवाइसेस है, तो आप क्या करोगे? You will take something which is having n number of different ports to get connected, isn't it? It is similar like that. And सबसे important, it is a layer 2. मतलब ये MAC एड्रेस के साथ डील करता है और ये IP एड्रेस के साथ डील करता है. मतलब डिवाइस बनाया ही गया है उस रीजन के लिए. Point 2 points are clear? Perfect. Perfect. While switch is used by only LAN. LAN क्यों? अगर आपको लेयर 3 के तरफ जाना है तो ऑब्वियसली आईपी एड्रेस के साथ आप डील कर रहे हो. आप वाइड एरिया नेटवर्क के साथ डील कर रहे हो, राइट? नेटवर्क्स को समझने का जो ब्रॉडकास्टिंग या राउटिंग है वो स्विचिंग नहीं कर पाता है. इज दिस क्लियर?
Routing means आप गाड़ी निकाल रहे हो and you're going out, you want to go to church gate, and when you want to drive, you should understand the navigation, okay, which route to select, what to be done. ये सब जो डिसीजन मेकिंग है ये स्विच नहीं कर पाएगा. मतलब समझ लीजिए स्विच इज लेस इंटेलिजेंट एंड दिस इज मोर इंटेलिजेंट. गेटिंग? मैम सो लाइक स्विच सिर्फ एक फ्लोर, एक सर्टेन सिंगल फ्लोर लेवल पे काम कर सकता है, whereas राउटर जो है वो पूरी बिल्डिंग को, लाइक बिल्डिंग का नेटवर्क कनेक्ट कर सकता है, राइट? इसमें थोड़ा एड ऑन करूंगी. स्विच विल बी वन फ्लोर इन द सेंस, समझ लीजिए पूरे बिल्डिंग में कुछ लैन चल रहा है. ओके, हो सकता है आपके बिल्डिंग में ही एक स्पेसिफिक नेटवर्क को सबनेट किया गया हो. ओके ओके, तो जरूरी नहीं कि स्विच आपके एक फ्लोर में काम करेगा. स्विच आपके 2 फ्लोर्स को भी कनेक्ट कर सकता है. गेटिंग मी? यस मैम. ओके, सो सपोज आपका लैन है और आपने वीलैन 10 बनाया और एक वीलैन 20 बनाया. ये है 20th फ्लोर में, ये है 10th फ्लोर में. तो मैं ये नहीं बोलूंगी भाई ये 20th फ्लोर में, ये 10th फ्लोर में, तो चलो राउटर लेके आओ बीच में. आर यू गेटिंग मी? सो इस लैन के रिलेटेड जो भी है लोकल एरिया, आपका पूरा एक कैंपस लैन का कॉन्सेप्ट आता है अभी. कैंपस लैन. ओके, कैंपस लैन में क्या होगा, आपने यहाँ पे वीलैन 10 बनाया, 20 30 ऐसे आप 4000 वीलैंस बना सकते हो. मतलब आपको स्विच लाने की जरूरत नहीं, आप 4000 वीलैंस बनाओ जो शायद 2 बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहा है. आर यू गेटिंग? तो आपने बहुत जगह पर स्विच यूज किया एंड सपोज 2 बिल्डिंग्स है और आपको लग रहा है वो डिफरेंट नेटवर्क्स में फॉल हो रहा है, जब आप राउटर पिक्चर में लेके आइए एंड वो बिल्डिंग एक स्पेसिफिक जोन में है एंड वो एक सपोज एचडीएफसी का ब्रांच है, यू वांट टू कनेक्ट सम अदर, देन यू ब्रिंग राउटर इन पिक्चर. सो राउटर देखो लैन में भी काम करेगा एज वेल एज मैन. मतलब ये नहीं बोल सकते कि एक फ्लोर में तो राउटर नहीं चाहिए. आर यू गेटिंग? हो सकता है आपने एक ही फ्लोर में जो काम करा आपने बहुत सारे नेटवर्क्स को यूज किया हो. क्लियर गाइज? तो जब आप बुक में देखते हो ना, जब आप बुक में देखते हो, इंटरनेट पे देखते हो. हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है? बिकॉज वॉइस इज गेटिंग इकोड. When you see in the book, no, internet, whatever, you will have a specific definition when you go from your school level to college level to all the books in the organization. So real world में थोड़ा सा अलग level. See, is defined as a computer network that links the local area like school, university, organization. तो आपको लगता है हाँ एक बिल्डिंग है ना, चलो लैन आ गया. लैन आ गया मतलब राउटर नहीं आ गया, ऐसा नहीं. ओके, इंपॉर्टेंट है डिफरेंट नेटवर्क्स को आप कनेक्ट करें. नेटवर्क मीन्स व्हाट, सपोज 10.20.30.40 और एक नेटवर्क है 100 का नेटवर्क. ये दोनों अलग नेटवर्क हो गए, इसको दोनों को कनेक्ट करना है तो राउटर पिक्चर में लाइए. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. ओके, देखो अभी आप लैन का डेफिनेशन देखो, किलोमीटर बोलेगा, जरूरी नहीं है. आजकल कैंपस लाइन भी हो गया, मतलब थोड़े रेंज बढ़ रहे हैं फिर भी आप उसको so see they are telling LAN is a computer network that interconnects computer with limited areas such as residence, school, campus, building. By contrast, why it is not only coverage large geography but also generates involve least telecom. That means आप डिटेल में जब जाओगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, जरूरी नहीं कि एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग को भी कनेक्ट करना है, स्पेस बढ़ रहा है तो भी समवेयर LAN comes in picture. बट रीजन चेंज हो गया तो आप उसको मेट्रोपॉलिटन. रियल वर्ल्ड में देयर इज नो मैन, सिर्फ LAN और WAN. ऑल गुड? Yes, ma'am. Anything silly question in your mind, do not hesitate. पहले ही बता दिया था. Okay, perfect. Point number 1, point number 2. देखो guys, I have already focused on practical can be done like half an hour, 2 hours, 3 hours. You sit, you have what step to be done. But concept understanding in my class is important. वो एक बार समझ लिया ना तो practical आप आराम से कर पाओगे. Help to connect different devices. ठीक है? For in single broadcast समझ गए? Single broadcast means you want to talk to from 1 to 4, but what is happening? 2 and 3 is also listed. You don't want that to happen. Okay, ये नहीं होना चाहिए. So what you can do? You can have a concept of dividing your this space into concept of VLANs. मतलब आप क्या करोगे? ये computer and this 4th computer you will put under VLAN
suppose 10, and 2 and 3, suppose that you can put under VLAN 20, so that there is no problem of hearing. If you guys want to send to 4, 4 ही सुनेगा, 2 और 3 नहीं सुनेगा because वो अलग VLAN. Clear? Yes. Okay, any other question? More number of ports maybe. Yes, which is having more number of ports. Let's see that. Can you see, guys? No stale information. Real-time information is in front of you. It can vary from 5 ports to 52 ports. When consider the number of ports you will need, you can think about the number of users when network supports. मैं कोई भी book open करके आपको हाँ ये book में 42 लिखा है वो नहीं बता रही. It is real fact, real data in front of you. Are you getting me? So that doesn't mean book is not. Book आपका reference है जिसको आपको exam के लिए prepare करना है. Perfect. But real world से deal करना, you have to deal with this. So see, you can see Ethernet switch port types. What are they? Let me click it here. एक बार पहले save कर. It is interesting. If you have interest into this, you can enjoy the process. See here. So आप ये देख रहे हो console connect कर दीजिए. ये आपका है 1 gig combo port. Okay, ये different services के लिए use होगा. These are speed. मतलब ये इतना speed ही capacity ले सकता है. Okay. Now so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा होता है. And this is your SPF. So SPF के different functions होते हैं. And this is trying to say you that what speed it can give you. Perfect. Okay, this is how switch will look. Perfect. Let me click on this link. Differentiate switch port and data type. Chat में डाल रही हूँ. Whenever you get time, have a look. Okay, so this is all about your switch. Once you understand, okay, switch is helping you out to connect, switch is helping you out to differentiate, or it falls into same broadcast domain, right? So Sadik question था about the difference, right? So we were seeing the difference. I hope Sadik आपको basic idea समझा दो which का difference. Okay, now see here. Through the routers, data is sent in the form of packet. So you technically जाएंगे. Okay, data is deal with packet. Packet has IP version 4, version 6, then IP routing mechanism, and this is in the form of frame. Ethernet frame बोलते हैं. There is less collision taking place in router. Why less collision? Just now I've shown you that if you're sending to one device to other device, इसके पास collision avoidance mechanism है. And while there is no collision taking place in full duplex switch, मतलब आजकल अभी ऐसा आ गया है कि full duplex switch है, so carrier says multiple access with collision avoidance and detection mechanisms उसके अंदर होता है, which is CSMA and collision detection and avoidance. वो सब mechanisms which is having. Router is compatible with NAT. Very, very important. Private address to public address conversion, router is having that, whereas switch is not having. Types of routing it does is adaptive and non-adaptive. Types of switchings are circuit, packet and message. मतलब यहाँ पर routing हो रहा है, यहाँ पर switching हो रहा है. Are you getting me?
Sadiq, can you Yes, acknowledge me? Because आपका वो question था. So I thought after that. Perfect. The next point which I want to discuss is it uses MAC address to deliver the frame. अब इसका अर्थ क्या है? How this looks is like this. ऐसा frame होता है which has Ethernet. तो अगर आपको पूछा गया कि layer 2 has which frame, like अगर frame बोला गया तो कौन सा frame वहां पर काम कर रहा है? You have Ethernet frame. Okay, so Ethernet technology वहां पे काम करेगा. So Ethernet has, then you have your IP. IP means आपके layer 3. Then you have TCP. Then you have your data, isn't it? It works like this. Now this Ethernet is dealing with your MAC address. ये आपको कैसे समझेगा guys? Ethernet MAC address के साथ deal कर रहा है. Technically sound. जब आप थोड़ा डिटेल में जाते हो, quickly have a look on Ethernet frame. एक बार देख लेते हैं. Let me show you that frame. Yeah, this is the frame. But that means start imagining कि आपके switch के अंदर जो frame है ना, जब मैंने OSI layer पढ़ाया था, are you there with me guys? तो हमने बोला था top level पे there is message. When you go down, it is in form of segments. That means transport layer. When you come to routing, that same information is treated as packets. When you go down to data link layer, that same information is treated as frame. तो frame आपका ऐसा दिखेगा. Is this clear? Okay. अभी थोड़ा सीरियस होना है guys. That means you understand the concept. ठीक है. Technically आपको पूछा गया, okay, what is Ethernet frame? What is IEEE? तो जब आप layer 2 टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हो, every time you will have IEEE 802.3. जैसे आपने 802.3 देखा, it should there be in your mind that okay, it is an Ethernet technology. Okay, तो frame ऐसे दिखेगा. There is a preamble. Preamble ये बताता है कि ठीक है, अब हमारा frame is about to start. Okay, that means एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बताता है कि information is about to start. Okay, and if you have a sender and if you have a receiver, इन दोनों को synchronization करना है, वो आपका preamble आपको indication देता है, which is 7 byte of information. Okay, and how this 7 byte information looks, it is in a form of 101010. As a user हमको नहीं समझेगा, computers will understand that. This is like a delimiter. जैसे हमारा पुलिसिंग होता है, सिमिलरली ये आपका फ्रेम स्टार्ट का इंडिकेशन है. डेस्टिनेशन, कहां पर पहुंचना है, वेयर यू वांट टू रीच, फ्रॉम वेयर यू हैव केम. सपोज आई वांट टू रीच टू डी, और इफ आई नीड टू रीच टू एक्स, गिव मी अ मिनट. इफ आई नीड टू रीच टू एक्स, आर कहां से रहा है, ए से आ रहा है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ माय दिस फ्रेम? डेटा का साइज क्या है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, ज्यादा करके डेटा का साइज 46 बाइट टू 1500 बाइट होना चाहिए. अगर आप 1500 बाइट क्रॉस करते हो, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू क्रॉस 1500, यू हैव टू डू फ्रैगमेंटेशन. दैट मींस उसका उतना कैपेसिटी नहीं. जैसे आज हम मिल रहे हैं, आई कैन टेल यू दैट ओके, we are meeting for 1 hour, we are meeting for 15 minutes, we are meeting for 10. अगर मैंने 15 minutes बोला या half an hour बोला, and we talk for 2 hours, तो आपका लिमिट क्रॉस हो जाएगा, राइट? सिमिलरली 46 टू 1500 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही वो कैरी कर सकता है. अगर साइज ज्यादा है सो प्लीज फ्रैगमेंट. दिस इज फॉर एरर चेक. क्या कोई एरर है, कुछ इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है, सो फ्रेम सीक्वेंस चेक होता है यहाँ पर. इज दैट क्लियर गाइस? अब मैं इमेजिन, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, मैक एड्रेस, this is so much big, ये इतना बड़ा है. Any doubts? Let me keep on sending you the links. Then quickly take your notepad, copy paste it, जैसा टाइम मिल रहा है देखते जाइए. Next, see guys, I might go to real time lot of information जो मुझे practically आपको दिखाना होगा. If you want any link, do let me know that time. Okay, MAC address हुआ, then IP is done. So now this is layer 2, this is layer 3 coming. वो बोलते हैं okay, let IP also come. IP means what guys? Which frame? This was there in your BSc.
बहुत लोगों को न्यू लगा होगा अभी, people who are from physics and all, but this is your BSc level. So IPv4. So whatever I have drawn here guys, ये जो मैंने लिखा ना अभी IP, ये IP is IP version 4 or version 6. This looks like this much big it is. Is that clear? ये क्या बताता? This says, hey, you have already given me MAC address, so let me add my information. My version is 4. My whole header length is suppose 20 bytes. My type of service means क्या वो voice information है, क्या वो video information है, whether it is a data. So you have type of service based on which priority is decided. Suppose you have real-time information, which is very crucial, or you can say it is with respect to, it cannot have any delay. So आपने उसको ज़्यादा high priority, isn't it? Like for example, you have visited a hospital. Some is suffering from fever, some is having an accident, some is just came for some blood test. तो आप preference किसको दोगे? Accident वाले बंदे को कि for a blood test person? For an accident person, isn't it? Similarly like that, you have 3 informations coming in: voice, video and data. You have to decide what preference will be given. अब वो preference कैसे decide होगा? Based on the type of service parameter 1010 क्या यहाँ पर set होता है, उस हिसाब से router को समझता है क्या decision है. Clear guys? Why I'm going so fast? Because this is all your BSc. A quick revision, total length, identification करो आपके पूरे packet का. IP flags, like क्या आपके पूरे फ्रैगमेंट को मुझे फ्रैगमेंट्स करना है या नहीं करना है, सब यहाँ पे डिसाइड होगा. एक बार आपने करना है या नहीं करना है, देन यू विल डिसाइड दिस लोकेशन. वो लोकेशन फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट में होगा. देन हाउ मच हॉप्स इट कैन टेक अहेड. सपोज वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, 1 2 3 4, कितना हॉप वो ले पाएगा. जितना हॉप आप लोगे, सपोज यहाँ पर 128 है, नेक्स्ट टाइम वो 127 होगा, देन 126. It will keep on reducing as you move from one router to another. This is the protocol. What is the protocol, guys? अगर आप TCP के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पर 6 नंबर आएगा. अगर आप UDP के साथ काम कर रहे हो, the number will change. Are you getting me? Protocol. अभी मैं 6 ये सब कैसे बोल रही हूँ, guys? Because obviously I'm dealing with this from long amount of time. आपके लिए भी ये new होगा, तो आप प्रोटोकॉल नंबर्स के चार्ट को देख लो. Can you see the chart? TCP 6, UDP 17. So real world, whenever you deal with Wireshark and C, आपको UDP नहीं दिखेगा. You will see this number, and this number will also be in 1010. Clear? Mic testing, clear? Anyone can acknowledge, guys. I'm reading the chat also. Yes, Perfect. ये भी बहुत अच्छा है. Link, network lessons. You can refer at any point of stage without any ambiguity. Perfect. With your permission, let me proceed. This is TCP. This is TCP. Again, TCP also has an header. Reliable communication करना तो TCP use कीजिए. Every header should be like by heart to you guys. मतलब that has been expected. Can you see? Reliable protocol. If you want to send any information, you want it to be reliable, then use TCP header. TCP header says there is source, there is destination port, sequence number. For example, you have a lot of packets, and those packets has to be rearranged. So आपको rearrange करना पड़ता है destination. So you have sequence number 1 2 3 4 ऐसे allocate. Acknowledge it. Then you have flags, windows, checksum, and urgent pointer. Perfect. Okay, let me come back to my switching two concept. One is helps to connect different device. Other is by default it falls under one broadcast. Okay, switch के पास 3 important functions है. Okay, this switch is having 3 important functions. What are those? First function is address learning. What is the meaning of it? Switch को पता ही नहीं ना.
अभी अभी स्विच का जो मैक एड्रेस है, टेबल, स्विच के पास टेबल होते हैं, दिस इज स्विच. हाउ राउटर इज हैविंग राउटिंग टेबल गाइस, वैसे ही स्विच के पास देयर इज अ टेबल व्हिच इज कॉल्ड एज मैक टेबल और कैम टेबल, कंटेंट एड्रेस टेबल. एवरीवन गुड? Perfect. How router is routing table? Routing table means what? Okay, which is the next hop I have to take? Where I have to go? How I'll reach my destination? Switch को भी पता होना चाहिए. So it has CAM table or MAC table. Okay. Now, initially these all MAC tables are blank because उन्होंने address को learn नहीं किया होता है. Is that clear? Sorry. I'll repeat again. Initially, the CAM table or the MAC table is blank. It is similar like when I met you for the first time, my database was blank. But now I know, okay, who is Prateek? Now I know who is Kunal. Why? Because I've seen you n number of times. Are you getting me? Okay. Similarly, switch को पता ही नहीं होता. Oh, 192.168.10.3 से आ रहा है क्या? ठीक है, 10.3 पे जाना है. स्विच को कुछ नहीं पता. उसका जो मैक टेबल या कैम टेबल पूरा एम्प्टी होता है गाइस. तो जैसे ही आप पहला कंप्यूटर कनेक्ट करते हो और आप पिंग करते हो, रिमेंबर यू डू पिंग. सपोज दिस इज कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, आप पिंग कर, जैसे आप पिंग करते हो इसका कैम टेबल में ये क्या करता है, स्टोर करने की कोशिश करता है. आर यू गेटिंग मी? ओके. Yes, सो ma'am. So remember here, this is, suppose this is your computer 0A. Why 0A? Because IP address नहीं है ना उसका identity फिलहाल के लिए. Okay. Let me clear this off. Suppose this is one computer connected, whose MAC address is 0A. This is 0B. This is 0C. ये मैंने MAC address लिखा. Why? Because I'm at layer 2. And ये किससे connected है guys? This is connected to port number 1, port number 2 and port number 3. So initially when I do ping, जैसे मैंने पिंग लिखा, ओके पिंग लिखा क्या, मैं फिलहाल 192 पे हूँ और ऑब्वियसली मैं मैक को तो पिंग नहीं करूंगी. आई विल डू 192, 168, 10.3. जैसे मैंने ये लिखा, ये हॉप होकर यहाँ पर जाएगा. इट विल चेक, ओके डू आई हैव एंट्री ऑफ 192.168.10.3, मीनिंग क्या 0C का कुछ रिप्रेजेंटेशन है एट पोर्ट नंबर 3, क्या कुछ कनेक्शन है. ओके 10.3 का मैक इज 0. Okay, let me fetch and give it back. Are you getting? तो वो चेक करेगा, हाँ 0C पे जाना है. Is that clear? Yes, Okay. Now what will happen is, this is fine. This is fine when guys, when you already have entry. But starting में क्या होता है guys? Entry नहीं होता. सबसे पहला जब entry है ना नहीं होता. क्यों नहीं होता? Because Mac ये जो कैम टेबल है ना, ये every 300 seconds अपने आप को फ्री कर देता है. मतलब इसको बर्डन नहीं लेना है. समझ रहे हो? मतलब ये अपने पूरे डेटाबेस को क्लियर करता है एवरी 300 सेकेंड्स, मतलब 5 मिनट के अंदर. आर यू गेटिंग मी गाइस? क्यों क्लियर करना पड़ता है? बिकॉज इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं गाइस. आई रिपीट द वर्ड, इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. देयर आर सो मच कंप्यूटर्स कनेक्टेड दैट अगर ये ऑल द एंट्रीज भरते जाएंगे यहाँ पर, इट विल हैंग और इट विल क्रैश डाउन. आर यू गेटिंग मी? वो बोलता है ठीक है रियल टाइम पे आएंगे देख लेंगे हम, नहीं है तो एड्रेस लर्न कर देंगे, बिकॉज हमारा फंक्शन ही वही है एड्रेस लर्न करना. अभी फॉर एग्जांपल गाइस, नाउ आई एम डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल. अब मैं आपके साथ डील कर रही हूँ, आपका पूरा डेटाबेस मैंने मेरे पास स्टोर रखा एंड ओके माय नेक्स्ट क्लाइंट इज कमिंग, उसके बारे में मैंने स्टोर, आई एम कीपिंग ऑन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एवरी नाउ एंड देन. So what will happen? It will be a burden on us. Are you getting me? Similarly, I'll put it somewhere, I'll erase time bean and take a fresh information. Is that clear? yes. Put it somewhere is nothing but ARP table, जिसमें आपके यही एंट्रीज 4 घंटे के लिए होते हैं. दिस इज द रियल फैक्ट. ये आपके ARP टेबल में 4 घंटे के लिए होते हैं, 4 hours के लिए होते हैं, just for a backup. Now, this is very detailed information. Let me erase this. This will help you technically if you go outside in the organization या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. Perfect. Now, initially blank होता है, तो जब आप पिंग करते हो गाइस, आपने नोटिस किया होगा when you do ping, okay,
यहाँ पर तो नहीं आएगा। जब आप पहली बार पिंग करते हो, आपने नोटिस किया होगा मेरा ऑलरेडी एड्रेस फेच किया गया है। Give me a minute. गाइस मैंने देखो पिंग किया टू एन एड्रेस। इनिशियली आपने देखा होगा थोड़ा सा उसने पॉज लिया। हैव यू सीन दैट? तो स्मॉल पॉज। ओके, so if you get like this, see carefully, if you get dot dot and then like this, are there with me? Yes, ma'am. This is a meaning कि उसके मैक टेबल में वो एंट्री नहीं है, वो चेक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो लर्न कर रहा है मैक एड्रेस। ओके, लर्न हो चुका एंड देन वो अपने आप को रिप्लाई कर रहा है। मतलब ये जो 2 पॉइंट के स्टेज पे वो अपने आप में एड्रेस स्टोर कर रहा है। ओके, 192.168.10.3, ओके इसका मैक एड्रेस है 0A। 0A नहीं होता है, 0A 135 व्हाटएवर हेक्साडेसिमल। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब आप यहाँ पे चेक करोगे ना आर्क टेबल। Just check here R, you can add new address also. Can you see? This is your MAC. Just an example. Static entry add करना है 00, 48 bits का होता है 6 octet. Clear? Yes, ma'am. Guys, any doubt in your mind or you feel, oh ma'am, ये बहुत ही something new we have learned or anything, whatever आपको कोई revision चाहिए, quick अभी बता दीजिए switch का। switch का base idea समझा, what it does? Address learning. तो पहले blank होगा, जैसे next fetch होगा, what will it do? Router has a routing table, switch has a MAC, यहाँ पे port number होगा 1 2 3, okay, 1 port number 0 है, 2 port number का MAC is 0, okay, next time when you talk 1 and 2 पे जाना है, वो बोले ठीक है 3 पोर्ट नंबर से बात कर रहा है, मैक ये ले लो। तो आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, यू विल नॉट गेट 2 डॉट्स। क्लियर? Yes, ma'am. परफेक्ट। एक चीज बता देती हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू मी इन माय क्लास, I have 16 of them. Okay. So I need an acknowledgement, guys. Have you understood the first feature or first function of switch, that is address learning? Okay, Sadiq is yes. Others? Yes, ma'am. Okay. Hृदय also yes. Just Kiran. Yes, ma'am. Perfect. Guys, जो समझ रहे हो ना, एग्जाम के लिए मत समझो। अगर आप यहाँ पर हो, ओके आई विल गिव एग्जाम एंड स्कोर एंड देन आई फॉरगेट, नो। एनी पॉइंट ऑफ स्टेज, इवन दो यू आर टेक्निकली फॉर द वेब डेवलपमेंट और सिक्योरिटी या कोई भी फेज में जाना चाहते हो, क्लाउड, उनको भी वापस नीचे आना पड़ता है फॉर नेटवर्क। आर यू गेटिंग मी? ओके, आप क्लाउड में जा रहे हो, आप सर्विसेज इंप्लीमेंट कर रहे हो, बट आप बेस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट कर रहे हो, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन नॉट गिव क्लाउड सर्विसेज। ऑल गुड? परफेक्ट। क्विक देख लेते हैं कुछ डेमो अगर पॉसिबल है। जस्ट ऑब्जर्व, डोंट डू एनीथिंग, देखिए क्या चल रहा है। Guys, I've taken one computer connected to a switch. देखो ग्रीन है, दूसरा ऑरेंज, टाइम लगेगा चेंज होने को।
because there is STP running. सुना है कभी STP के बारे में? Spanning Tree Protocol. देखो अभी क्या होगा ना, it will take some time ऑरेंज को चेंज होने. एक ही है डायरेक्ट, कुछ प्रॉब्लम. जैसे आप और एक डिवाइस कनेक्ट करते हो, उसको लगता है ओके कुछ लूप फॉर्म होने वाला है क्या, that slowly gradually see it is changed to green. It's happened. Right? Guys, I've made switch on and will show MAC address table. Anything you can see, right? कुछ भी दिख रहा है स्विच पे? मैंने मार्केट से नया स्विच लाया, अभी मैंने जस्ट लाया मार्केट से, फ्री में लाया, because there is stimulator to show MAC address table. Can you see anything? No. See, this is एक small table बनाया ना मैंने, डमी बनाया. रियल में ऐसा दिखेगा. All are there with me? One or two? Yes. Perfect. Guys, I'm considering. Yeah. Only because port अभी तक assign नहीं किया इसीलिए issue आ रहा है. Yes. Issue नहीं है, my dear. It is show MAC address table. तो मैं analyze कर रही हूँ. जैसे अगर मैंने कंप्यूटर को IP address दे दिया, okay? और connected तो already है, isn't it? ये देखिए. Thanks for asking that question. ये देखिए switch है. कनेक्ट तो कर दिया, बट वो क्या बोल रहा है, कनेक्ट तो है बट ये कंप्यूटर को आपने आईपी तो दिया नहीं है, तो मुझे समझेगा कैसे करना क्या एग्जैक्टली. आर यू गेटिंग मी? इट इज सिमिलर लाइक प्रतीक इज कनेक्टेड टू मी, सादिक इज आल्सो कनेक्टेड टू मी, बट सादिक और प्रतीक ने मुझसे बात करना स्टार्ट ही नहीं किया बिकॉज सादिक और प्रतीक को है नामकरण नहीं हुआ है. आर यू गेटिंग मी? Yes, पहले ma'am. सादिक एंड प्रतीक अपना आइडेंटिटी करेंगे. ओके, दे विल से ओके माय नेम इज प्रतीक, माय नेम इज सादिक, फिर जाके मैं सेंटर में स्विच हूं, इजंट इट? मुझे फिर समझने की कोशिश, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. Okay, and that try to understand is called as first function, that is called as address learning. Clear? तो क्या इसने कोई एड्रेस लर्न किया है my dear students? Have they learned anything? No. Not yet. All clear? मतलब all clear means understanding. and तो बोलेंगे मैम full clear, everything is gone up. Keep it with you. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. Now see, I'll give the identity. Okay. मतलब इमेजिन करो मैंने एक स्विच लाया मार्केट से एंड नाउ आई एम गिविंग आइडेंटिटी टू माय कंप्यूटर. अब कंप्यूटर को मैं आइडेंटिटी. गाइस दिस इज नॉट योर प्रैक्टिकल. मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, उसके कॉन्सेप्ट में मैं दिखा रही हूँ. जो प्रैक्टिकल रहेगा मैं आपको बताऊँ. ये आप ट्रायल एरर अपने घर पे कर सकते हो, जर्नल में डालना नहीं. ऑल गुड. 10.0.0.1. आई टोल्ड यू दैट जहाँ पे भी मुझे पॉसिबिलिटी हो दैट यस. नाउ सी डिफॉल्ट गेट में मुझे देना नहीं है गाइस. व्हाई? Okay, you don't have to go out of the network. Very good. And by default, what is happening? They are connected, no? Because it falls in single broadcast domain. जैसे it is similar like you all are staying in one PG. 4 friends है, एक ही रूम के अंदर रह रहे हैं, तो आपको डोर ओपन करके किसी और के रूम नहीं, वो सिर्फ if you stand up, you'll see your friend next to you only. Are you getting me? It is similar like that. एक ही space के अंदर है आप लोग सब. Okay, given. गाइस मैं पैकेट ट्रेसर में आपको सिर्फ डेमो के लिए क्विक दिखा रही हूँ. जब प्रैक्टिकल करना है, क्विक इन द सेंस लोड होने में टाइम नहीं लगेगा, इमेज एंड ऑल. सो हमारा कुछ भी टेक्नोलॉजी हमको देखना है क्विक वीकेंड. इसीलिए आपको कहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, एग्जाम में इट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट वाज BSc लेवल 2.
clear with that? Now what I'll do is I'll assign, and after assigning, let me check क्या हो रहा है. Let me check again. So MAC address table. Guys, मैंने कुछ किया अभी? Did I did anything like ping or anything? No, ma'am. Fraction of No, ma'am. seconds. उसका time period होता है. It has all the time periods of learning. Milliseconds. VLAN 1 मतलब क्या? एक ही डोमेन के अंदर. ओके okay? एक ही डोमेन के अंदर गाइस. अगर ये VLAN 20 हो गया मतलब अलग अलग नेबर है वो लोग, एक ही घर के अंदर नहीं है. इट इज अंडर वन होम, वन रूफ. दिस इज वाई वन, मैंने कोई वन क्रिएट नहीं किया गाइस, बट बाय डिफॉल्ट इट इज वन. मैक एड्रेस, ये देखिए इसने मैक एड्रेस को लर्न भी कर दिया. वो बोले ठीक है, हमारे पोर्ट नंबर 0/2 से जो कनेक्टेड है कंप्यूटर, उसका डायनामिकली हमने मैक एड्रेस को लर्न कर दिया. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीथिंग, नथिंग इज थियोरेटिकल. मैंने बोल दिया एक दिन, फिर परसों हम देखेंगे. नथिंग, सामने दिखा रही. पास 0/1 डायनामिक. ओके, क्या है वो कंप्यूटर का मैक एड्रेस? 000C CF01 CA0C. नाउ सी, डोंट गेट कंफ्यूज. कोई स्विचेस में ऐसा रिप्रेजेंट होता है, सम स्विचेस रिप्रेजेंट लाइक दिस. आर यू गेटिंग मी? जो भी है टोटल आपका होना चाहिए 48 बिट्स का. देन 6 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, ऑक्टेट्स रहेंगे 1 2 3. I'll show you. See, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, तो ये आपको 12 दिख रहा है, बट इंटरनली व्हाट इट इज, हियर यू हैव, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन सम bit representation. So let me show you the MAC address. So don't get confused कि मैम इधर तो ये अलग दिख रहा है, ये कैसे 4 सेक्शन दिख रहा है? MAC address representation. Okay, can you see here? 48 bits. ये कभी चेंज नहीं होगा. एंड ये चेंज होता है किसके लिए? 48 to 64 का मैपिंग होता है जब आप एक्सटेंडेड EUI के साथ जाते हो. वो आगे का कॉन्सेप्ट है. फिलहाल इतना देखिए कि यू हैव 48 बिट्स represented as a string of 12 hexadecimal digits. These are often grouped into pairs separated by colons या फिर dash. For example, MAC address can be like this, maybe given as here 1 2 3 4 5 6. 6 sections होंगे. Perfect. And total आप convert करोगे, you will have 48 bits. So here 0 0 0 0 0 0 0 0. 1 is 0 0 0 1. B is, what is B? A is 10. 11. Yes. Clear? Perfect. 11 का बाइनरी निकालना है. चलो ठीक है. Let me quickly post something for you. MAC address representation network lessons. इसको भी पढ़ना है guys. You can refer this. पढ़िए, समझिए, जितना नॉलेज दे सके. See, how does a switch learn MAC? देखो, क्लिक करो. ये पूरा नहीं मिलेगा. You will not. This is paid. This is paid site. Okay, you will get only half. How does switch learn? See, पहले फ्रेम जाएगा, कुछ पता नहीं होता है. स्विच ने लर्न किया. पहला देखो ब्लैंक है, A को फेच किया, 2 को फेच किया. You will not get more content.
but at least you can have an idea. And मैंने पूरा demo आपको दिखाया. Now let me ping. Ping. We add one more cup. Okay guys, दिखा आपको? न्यू कंप्यूटर को मैंने ऐड किया तो क्या आया आंसर? Timeout. Why timeout? Because it was searching in the MAC address. So okay, what is this new computer now, which is at port? Okay, मेरे पास तो information नहीं है. Okay, let me find it out. उसके लिए उसको few seconds लगे. Clear, and that is called as learning. This is the first functionality. So I hope first functionality is clear. Yes, ma'am. Second functionality of a switch. क्या होता है ना जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, people are always routing. पहले स्विच को समझो, बिकॉज वो एक ऐसा डिवाइस है जो आपको हेल्प करेगा टू कनेक्ट ऑल द डिवाइस, फिर राउटर का काम. ओके, स्विचिंग जिसको आता है, इट हैज लॉट ऑफ वैल्यू. ओके, फॉरवर्डिंग मीन्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन. मतलब आपको कहाँ पर भेजना है, क्या आपको यूनिकास्ट करना है, whether you have to do multicast, whether you have to do broadcast. Clear? Unicast means A to B. Multicast means A to B to C to D. Broadcast means A to B, C to D till X. सबको. One to one, one to few, and one to all. Clear? Then third comes is filtering. Okay, filtering means, as you know, just now we have seen, no, एक switch किसमें fall होता है guys? Single broadcast. So what filtering does? It divides the broadcast domain of a switch. People who are there in your office, or people who are traveling and listening, make sure that, I know आप acknowledge नहीं करते, but just make sure you're listening carefully and if possible, taking everything in your mind. But please stay connected. Next is, अब ये जो पूरा बड़ा है ना area, it is similar like a big switch where you have big means not physically big, n number of different ports. 48 ports मैंने just बताया अभी. 48 computers connected है, सब लोग एक ही डोमेन में काम. ओके, तो बहुत ही सही सिचुएशन नहीं. Imagine you have a building. Okay, let me quickly go for my VLAN topology के साथ. A minute, guys. I'm just copy pasting some doc.
Perfect. Okay, what I told you just now, filtering. That means it's not 48 computers are listening everyone, but क्या आप चाहते हो कि ऐसा हो? नहीं, because आपका organization ऐसा रहेगा, guys, that you have a building and you have IT department which is on first floor, you have some sales department on second floor, and you have HR department on the third floor. तो आप क्या चाहते हो? IT department के first floor में और एक IT department है जो आपका for example, fifth floor में, you want to make them connect. You want to put all your computers of IT department at fifth and IT department which is there in the first together. Okay, what you will do? You put 1, 2, 3, 4, 5, 6, all 6 computer under VLAN 2. Are you getting me? Then sales के जितने भी computers थे उसको VLAN 3 में डालो. HR के जितने computers है उसको VLAN 4 में डालो. Why you doing this? So that sales, IT and HR are isolated. Is this clear? Yes, ma'am. Let me draw the ports quickly. एक ही स्विच है, आपके 2 पोर्ट्स जाएंगे आईटी में. नेक्स्ट जो 2 पोर्ट्स है इनपुट अंडर सपोज टेल 2 कंप्यूटर. देखो एक ही स्विच से कनेक्टेड है, बट आपने क्या कर दिया, मार्केट से जाके 3 स्विच नहीं लाया अलग. आपने इस स्विच को लेकर 3 भागों में ब्रेक नहीं किया, राइट? मैंने एग्जांपल दिया था, यू हैव अ कैडबरी एंड यू वांट टू डिवाइड इट 10 पीपल. आप उसको स्मॉल भागों में डिवाइड करोगे, ब्रेक इनटू स्मॉल, इजंट इट? यहाँ पे आप ब्रेक नहीं करोगे, आप क्या करोगे, वर्चुअली उसको कनेक्ट करोगे. आई एम गिविंग पर्पसली सम एग्जांपल सो दैट यू कैन रिलेट. नेक्स्ट 3 पोर्ट्स है, तो आपने तीनों को डाल दिया एचआर में, तो स्विच एक ही है गाइस, बट आपने जो डोमेन है which was single, you divide into domain 1, domain 2 and 3, and जो 1, 2 and 3 is nothing but, अब मैं 1 क्यों नहीं लिख रही हूँ guys, because 1 is default VLAN. Are you getting me? मुझे क्या लिखना होगा, VLAN 2, VLAN 3 and VLAN 4. 1 में किसी को भी नहीं दे सकती. Is this clear? Ma'am, sorry if I'm interrupting. Is that the reason why there are different ports or isolated ports on a switch, like you just showed regarding SPF? No. SPF थोड़ा सा अलग है. वो स्मॉल फैक्टर का एक अलग कॉन्सेप्ट है SPF का, और उसके लिए पहला स्विचिंग का बेसिक टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा. ओके, SPF या स्विच पे आपने जो देखा था ना, वो अलग है. Small form factor pluggable device are hot swappable interface and use primary network and storage switches on switch SPF module. In short, आपको कभी switch real time पे requirement है या कोई ports को change करना है, okay? Swap करना है कोई ports को, fiber से ether में convert करना है, ether से कुछ speech you can say different speed में convert करना है, या fiber और that time आप SPF use करो. उसके लिए कुछ अलग टाइप के केबल कनेक्शंस भी होते हैं. ओके, सो आप जो सोच रहे हो वो यहाँ पर मैच नहीं है. whatever I am telling you right now, SPF को हम इधर कंसिडरेशन में ला ही नहीं रही हूँ. नॉर्मल पोर्ट्स. क्लियर? क्लियर जसकिरण? Yes, ma'am. सी इतने सारे स्विच, ये जो पोर्ट है ना इसके बारे में बात करें. पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3. 1 को तो सपोज यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट का मैं पूरा VLANs बना सकती. क्लियर? परफेक्ट. क्या करना है, ये समझ गया कि मुझे मार्केट से जाकर कोई भी स्विच लाने की जरूरत नहीं. सेम स्विच 48 पोर्ट्स और 30 कंप्यूटर्स है. 10 I can put under IT, 10 I can put under sales, 10 I can put under HR, but they are isolated. Isn't it interesting? मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ VLANs बनाने. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिजिकल सिंगल स्विच इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्विच. ये सोचिए कि आपके स्विच को 3 भागों में डिवाइड किया है. रियल में 3 भाग में डिवाइड नहीं है. यू आर जस्ट
virtualizing it. So virtually आप कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम है VLAN. And people have made, students have made it even more complicated. अरे VLAN क्या है? You get afraid of it. No, it is a LAN only, but virtually आप उसको divide, which is a single broadcast domain, and you are divided into multiple broadcasts without a switch. Sorry, without a router. आपको router लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप layer 2 पे काम कर रहे हो. जैसे आप layer 3 में जाओगे, you have to take the router because वो different networks को connect. Perfect. अब ऐसे कितने VLANs बना सकते हैं guys? By default, which VLAN you have? Just now I told you. That one. Perfect. How much VLANs you can create? VLAN is basically, ignore my spelling mistake because I'm writing in this tab, pen tab, तो कुछ ना कुछ flow हो जाता है, close together. So it is 12. It is a combination. Just like this, 2 to the power n, 2 to the power 12. तो कितना हो गया? 4096. Around 4096 VLAN. Imagine you can create. On what? On single switch. Isn't it interesting? अगर ये VLAN नहीं होता, you have to go to the market, buy 4000 switches. Clear? Again and repeat. It is basically in power of 12. 12 means 4096. You can create VLANs, that is 4096 on a single switch. इसका meaning ये है that आप 4096 broadcast domain बना सकते हो. Okay? ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब सब एक ही नेटवर्क में 10 डॉट. देखो इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए आपका 10 का एक पूरा ब्लॉक हो गया. ठीक है, आपने बोल दिया 10.0.0.1 से लेकर 10.0.0.2. 2 नहीं, सपोज 20. एक VLAN में है. क्लियर? नेटवर्क एक ही है ना, 10.0. सब नेटिंग. IP एड्रेस को क्यों वेस्ट करने का है? आपको आपका प्राइवेट एड्रेसिंग चल रहा है, आपके ISP ने पूरा ब्लॉक दे दिया है, जिसको पैसा नहीं लग रहा है, फ्री है, मानती हूँ मैं फ्री है, पर वो वेस्ट क्यों करना है? अगर प्राइवेट भी दिया हो, व्हाई वेस्ट? आप सबनेटिंग करोगे, इजंट इट? 0.0.40. नेक्स्ट, तो पुट दिस अंडर VLAN 10 जो IT के लिए है. ये आप डाल दीजिए VLAN 20 जो सेल्स के लिए है. ये आप डाल दीजिए VLAN 30 which is for HR. Perfect. Now they are in all same network, isn't it? So what is happening there is they can talk with each other, है ना? ऐसा हो जाएगा. बट आपने सबनेटिंग किया है ना, आपने VLAN ही अलग कर दिया. वो टॉक each other नहीं होना चाहिए, इसीलिए VLAN डाला. जैसे आपने VLAN डाला, ये बोलेगा अरे 10 यहाँ पर है ना, ये भी 10 है, हम तो भाई भाई हैं, we can understand each other, but still we cannot talk. Why? Because we have put it under VLAN. Is this clear, Hari? हम एक ही पेरेंट के चाइल्ड है, फिर भी हम बात नहीं कर सकते बिकॉज हमको एक को डाल दिया है मुंबई में, एक को डाल दिया बैंगलोर में, इसलिए हमने अलग कर. एंड दैट इज मुंबई एंड बैंगलोर इज नथिंग बट VLAN. क्लियर? Guys, I'll wait for a few seconds. I want everyone to tell me the data. Because unless I not understand, I might go to higher technologies and you are at the lower level. हम दोनों का sync नहीं है. There is no. Last time I'm asking, are you all understanding? Yes, ma'am. Okay, thank you. One yes is also enough for me. Okay. Where am I? Let me come back to my checklist. We have understood switch, we have understood functionality. Now we'll go to switch के पास कौन से modes होते हैं. Perfect. Before going to modes, let me show you. जैसे already switch यहाँ पर है. Show you. तो
ओके गाइस, देखिए जैसे मैंने शो VLAN बोला, उसने क्या बताया, ये सब समझना आपको जरूरी है। एज सुन एज यू टेक अ स्विच, आपके मार्केट से आप ये स्विच ला रहे हो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो एंड यू हैव गॉट दिस रोल, ओके, by the technical support or network engineer or wherever you get the chance, then you have this. तो आप पहले show VLAN कीजिए और देखिए, okay, default is 1 active. That means all the ports which are there in the switch, that is 0/1, 0/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी है 24 पोर्ट का ही स्विच है, 2 gig है उसके पास, all are falling under VLAN 1. Clear? Yes, ma'am. फिर आप स्टडी कीजिए, ओके VLAN 1 में तो कॉल हो रहा है, बट VLAN कहाँ तक जाता है, अभी जस्ट मैम ने बताया 4096, उसमें से कुछ VLANs आर रिजर्व्ड गाइस, तो देयर इज VLAN 0 एंड 4095 इज रिजर्व्ड. इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू these are reserved VLANs, and VLANs is a category. One is standard, means 1 to 1005, ये स्टैंडर्ड के अंदर आता है, एंड देयर इज एक्सटेंडेड, जैसे आपका ACL था वैसे ही 1006 टिल 4094, बिकॉज देखो यहाँ तक 5 हो गया, इसको भी कंसिडर किया तो 4096, 96 तक कभी नहीं जाता बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है. दीज आर ऑल एक्सटेंड. ओके, अब ये देखिए, दीज आर ऑल रिजर्व, मतलब ये ना, दीज आर ऑल द टेक्नोलॉजीज. इफ यू हैव फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, FDDIs में 1002 यूज होगा. ओके, these are all older technologies. इसमें ना ये सब फ्रेम रिलेज उस टाइम के लिए ये बनाया गया था. ओके, now it is probably in use depending upon the need and requirement of the organization. तो आप ये समझ लीजिए कि इसको आप कभी नहीं बना सकते, ठीक है, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट बन चुका है. अभी आपको बनाना क्या है, सपोज यू हैव टू मेक राइट नाउ VLAN 10 या VLAN 2 बनाना, you can make it 3, you can make it. Okay, any doubt? बनाना कैसे है? These are the interfaces. So decide. Okay, 0/2, 0/3. I have to put under VLAN 2. 4 and 5 को मुझे VLAN 3 में डालना है. Is this clear? Yes, ma'am. Let me tell you. Now guys, this all computer will talk with each other. अभी just आपने देखा है ना, पिंग तो हो रहा है, देखना तो वापस देख लीजिए. One and two. I have created a complex video, इसलिए वो टाइम दिखा रहा था. Successful. All are talking with each other, isn't it? चेक करना है तो चेक कर लीजिए, पहले ही. बाद में बोलोगे मैम पहले ही बात नहीं कर पाता. So all are talking with each other. अब हम क्या करेंगे? We can put this 2 computers under VLAN 2 और इसको डाल देंगे VLAN 3 में. Getting me? Give me a
Guys, I'm just putting some names so that it's easier for you. I don't have to mark it or write it again. Okay. हमने क्या बोला? It was in single broadcast domain. Now can I divide into other broadcast domain? Yes, I can. So let me take 2 PC and put under VLAN 2, other PC under VLAN 3. तो मुझे क्या करना है? पहले देखना है कि क्या कोई VLANs बने हुए हैं. Just now मैंने चेक किया VLAN तो नहीं बने हुए हैं. So what I can do is I can decide. Okay. Fast interface is this. This is fast interface 0/3. This is 2 and 3. वो बहुत important है. कौन सा interface कहाँ पर है? That is very very important. So you can just अगर overlap हो रहा है तो थोड़ा सा space दे दो and just see where your interface is going. Okay. अभी मुझे clear picture आ रहा है कि this is 3 4. So 1 2 3 4. So I'll take my switch. Switch I will just arrange it so that आपको side में topology भी दिख रहा है. Let's see if you can arrange it. Okay, interface up हो गया and all fine. Then so what I can do is मुझे लिखना है conf-t. Okay. Okay, I have to enable. Then conf-t. जैसे मैंने conf-t लिख दिया, I have to write VLAN. I have to write VLAN. कौन सा VLAN बनाना है guys? 2 बनाना है, isn't it? जैसे मैंने 2 बनाया, I can do and I can have other option also कि VLAN 2 3 4 एक साथ बना के रखे, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ. ठीक है. अब मैं VLAN 2 के अंदर चली गई. Okay. So what I can do is I can come out also and check. Okay, क्या VLAN create हुआ है? I can do VLAN 3. Okay, I can come out. ठीक है, हाँ ठीक है, VLAN 2 और 3 बना दिया, fine. Now I can do exit. क्यों मैं exit कर दी guys? पूरा बाहर आ गई and will show VLAN. Just देखना है क्या VLAN बना है. Okay, let me check. Can you see here guys? क्या VLAN बना है? I don't know how many people are watching my screen. One more time I'm asking. One person said yes. Yes, Is ma'am. VLAN created? Yes, ma'am. 2 and 3. But Yes, is any ma'am. port added? Thank you for the acknowledgement. Is there any port added? मतलब देखो यहाँ से मैं टाइप बोल रही हूँ Ethernet said कोई ports add किया गया है जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. As you can see here, ऐसे कोई ports यहाँ पे दिखाई दे रहे नहीं. Now you decide. Okay, what you want to add where? Okay, let me go back here and see 01, 02, 03, 04. So let me add interface under a member of VLAN. अब मेरा next step क्या होगा? First is to create VLAN. What is first step, guys? Create VLAN. Step 1 to create VLAN. Second step to add interface under its respective interface. Okay. Respective VLAN, not interface. VLAN. जैसे आपने वो डाल दिया, वो कैसे डाल? Now listen very very carefully. The switch has 2 modes. मैंने just बताया ना, मुझे mode के बारे में बताना है. Okay. Switch has 2 modes, guys. How many modes? 2. One is access and another is trunk. जब भी आप कोई कंप्यूटर टू स्विच से कनेक्ट करते हो, ओके, या कोई स्विच को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, तो एक्सेस मोड आएगा. एंड व्हेनेवर यू कनेक्ट एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस विद इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, मतलब कोई एंड डिवाइस नहीं है, बट इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है जिसके पास कुछ फंक्शनैलिटी होते हैं फॉर कनेक्टिंग योर नेटवर्क्स, मतलब स्विच टू स्विच, दैट टाइम जो आपका लिंक आएगा या मोड आएगा उसको हम बोलते हैं ट्रंक. इट इज सिमिलर लाइक एक ब्रिज होता है ना टू कनेक्ट
वन सिटी टू अनदर सिटी, तो आप सिटी टू सिटी कनेक्ट कर रहे हो, वैसे आप स्विच टू स्विच कनेक्ट कर रहे हो तब आप ट्रंक मोड पे जाओगे। बट जैसे ही आप ट्रंक मोड के अंदर आकर जब आप इस स्विच को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, दैट मोड इज कॉल्ड एज एक्सेस मोड। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? नाउ सी, मुझे यहाँ पे लिखना होगा दैट हे लिसन, लेट मी बाइंड। Ma'am, can you repeat access and trunk? once more? Yes. You have a switch, okay, and you have computers connected to it. Switch का मेरा sign ऐसे होगा. Computer is like this box, okay. Computer want to talk to switch. तब ये switch का जो port है ना, ये ports दिख रहे हैं 4 port, इसके modes क्या होंगे? Access. Clear? Yes, ma'am. And जब ये switch to switch communicate होता है, because हो सकता है ना कि 4 computers मेरे एक बिल्डिंग में हैं और दूसरे 4 कंप्यूटर अदर बिल्डिंग में हैं। ओके, तो इतना बड़ा केबल तो नहीं डालोगे, स्विच लाओगे, isn't it? Yes, ma'am. Got it. ओके, सो यहाँ पर जो पोर्ट्स होंगे ना, I'll call it as access. परफेक्ट, बट व्हेन दिस स्विच एंड स्विच बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्ट होता है, तब इनके बीच में जो केबल लगता है और कम्युनिकेशन होता है ना, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक कनेक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it. अब मैंने ये बताया बिकॉज इन माई टोपोलॉजी व्हाट आई एम डूइंग, I am putting fast and fast, both are 0 1 0 2 under which VLAN guys? 2, right? मुझे बोलना होगा that hey interface fast 0 1 please, उनका मोड क्या रहेगा? This mode will be access mode. अगर सपोज इधर और एक स्विच आता और उसको दोनों को कनेक्ट करना है, तब मैं यहाँ पर जाके बोलूंगी ट्रंक। क्लियर? Guys, I will not Yes, ma'am. repeat this again, ना, मतलब लैब्स में भी रिपीट नहीं होगा, किधर भी रिपीट नहीं होगा, जो भी है क्लियर करके लेना। ऑल गुड? आई विल रिपीट अगेन। VLANs तो बन गए, क्रिएट भी हो गए, ये वाला नहीं हो गया। कौन से इंटरफेस? दिस टू इंटरफेस आई हैव टू पुट अंडर VLAN 2। तो डालने से पहले मुझे मोड्स लिखना होगा। सो व्हाट इज द कांसेप्ट? लेट मी शो यू। आई विल राइट इट। यू से इंटरफेस, क्या मुझे हेल्प देगा? बिकॉज मैं कॉन्फ मोड में नहीं हूँ। इंटरफेस अभी देखो हेल्प दे रहा है। व्हेनेवर आई डू टैब आई डोंट गेट हेल्प। समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, ठीक है? व्हेनेवर यू स्टक इन एग्जाम आल्सो, मैम ये देखो एरर आ रहा है। समझा क्या एरर आ रहा है? वापस दिखाती हूँ। आई एम इन रॉन्ग मोड, मतलब मैं प्रिविलेज मोड में हूँ और मैं बोलती हूँ कॉन्फ़िगर करो मेरे स्विच को, तो देखो मैं टैब प्रेस कर रही हूँ गाइस, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। दैट मींस आई एम इन रॉन्ग मोड। तो मैं समझ गई। आई डिड कॉन्फ टी, एज सून एज आई डिड कॉन्फ टी, मुझे इंटरफेस करके मैंने टैब किया, मुझे हेल्प मिला। क्लियर? जो लोग सुन रहे हैं उनको समझेगा। इंटरफेस, नाउ आई विल राइट फास्ट। व्हिच फास्ट? जस्ट नाउ मैंने डिसाइड किया कि 0/1 मेरा VLAN 2 में आएगा। सो आई विल राइट स्विच पोर्ट। ध्यान से देखिए, स्विच का ये जो पोर्ट है जिसका मोड है, हिंदी में कन्वर्ट करिए, स्विच का जो पोर्ट है जिसका मोड है एक्सेस। I'll repeat. Switch port is having a specific mode. Please decide which mode you want. If you cannot decide, put question mark. It is telling you whether you want to do on your own. Sorry, whether you want to specify access, whether you want to do trunk. But if you cannot decide access or trunk, put it dynamic. Dynamic is not preferable in the organization. अगर गलती से भी ट्रंक एक्सेस हो गया, एक्सेस ट्रंक हो गया, मिस्टेक, स्विच बात ही नहीं करेगा, पूरा आपका नेटवर्क डाउन आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, अवॉइड करना है। पता है एज एन इंजीनियर कि भाई ये तो मेरा कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है, एक्सेस मोड डाल दीजिए, डायनामिक पे मत जाइए। मोड, मोड एक्सेस, which एक्सेस करना है, व्हाट आई हैव टू एक्सेस, एंटर। फिर वापस लिखिए, स्विच का जो मोड है दैट इज एक्सेस नाउ, एंड दैट एक्सेस मोड इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग इज VLAN 2। I have not created, I am just telling you, जो फास्ट है प्लीज उसको VLAN 2 में डालिए। क्लियर? Yes, और ma'am. किसी को डालना है, एक एक करके भी दे सकते हो, रेंज भी दे सकते हो। रेंज मींस यहाँ पर 0/1 लिखा ना मैंने, तो 0/1
1 एंड देन -2 ऐसा भी लिख सकते हो। 10 तक करना है तो 10 तक कीजिए। अभी ऑटोमेशन आ रहा है। हैव यू हर्ड अबाउट नेटवर्क ऑटोमेशन? सुना होगा ना, ऑटोमेशन फॉर इंजीनियर्स एंड ऑल। तो ये एक एक करके नहीं होता है। अभी व्हाट इज हैपनिंग, स्क्रिप्ट लिखा जाता है पाइथन में, 100 VLANs बनाने एक साथ स्क्रिप्ट को रन किया जाता है। VLAN इज एडेड SDN टेक्नोलॉजीज। शैल आई प्रोसीड? Yes. अभी देखो मेरा गलती हो गया, मैंने रेंज लिखा नहीं है ना। गलती मींस पर्पस आई वांट टू शो यू 111। सो इंटरफेस पास 0 / एक एक करके समझते हैं। 2 को मुझे डालना है। टेल मी नेक्स्ट व्हाट आई विल राइट। Switch port mode. वेरी गुड। कौन सा मोड? टॉक टू योरसेल्फ। एक्सेस मोड। Access. ओके, टॉक टू योरसेल्फ दैट ओके स्विच पोर्ट मोड, ऐसा बात करो, देन यू विल लर्न द प्रैक्टिकल। बाय हार्ट करोगे तो नहीं होगा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना दिया ऑलरेडी। अभी इसको एक्सेस करना है और इसको VLAN 3 के अंदर डालना है। ओ मिस्टेक, VLAN 2 के अंदर ही डालना था। लेट मी डू वन थिंग, रिमूव इट। ये मतलब अलग हो जाएगा ना, मुझे ये इंटरफेस को इसके अंदर ही डालना, रिमूव करके निकाल। This is I want to put under VLAN 2। जैसे मेरा हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या है, हुआ या नहीं। डू शो VLAN, चेक करते जाओ जो काम हो रहा है। क्लियर? VLAN 2 क्रिएटेड, एक्टिव है, फास्ट इंटरफेस। पहले मैंने मिस्टेक किया था ना, 3 में डाला। आई हैव टू पुट इट अंडर 2। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. जितना फास्ट आप एक्नॉलेज करोगे ना मुझे, आई कैन लाइक गो अहेड एंड वी कैन कंप्लीट एंड अचीव आवर टास्क। 1 2 3 एक्सेस मोड भी क्लियर हो गया। अभी मैं छोटे छोटे आपको एक डेमो करके बता रही हूँ टू क्रिएट VLAN एंड हाउ टू मेक इंटरफेस अ मेंबर ऑफ अ VLAN। ओके चलो नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल मी व्हाट आई डू। 2 तो बन गया, अभी और 2 बाकी है। दैट इज 1 and 2 इज दैट, 3 and 4 आई हैव टू ऐड। 24 I don't have to use 24। मैं पूरा कंपनी डिजाइन नहीं कर रही, आई एम जस्ट मेकिंग यू लर्न। 24 को पूरा ऐड नहीं करना, जिस छोटा टोपोलॉजी मेरे हिसाब से हमने डिजाइन किया फॉर लर्निंग। टेल मी व्हाट आई विल डू नेक्स्ट। Switch mode. नो, स्विच पोर्ट मोड के पहले मुझे Interface. इंटरफेस, आई टेल ओ इंटरफेस FA 0 1 and 2 talk to yourself। 1 and 2 is done now। So if you talk your 3. mind will revise। Yeah. Perfect, talk to yourself। switch port Mode. मोड नहीं पता ना, डोंट वरी, इट इज देयर, पूरा हेल्प मिलता है आपको। ये देखो मोड, क्वेश्चन मार्क डालिए मोड। which mode guys? एक्सेस। Access. स्ट्रंग तो नहीं करना है। then switch port एक्सेस बताना है। ओके एक्सेस मोड ऑलरेडी बन चुका है, प्लीज उसको बुलाइए। एंड नहीं पता पुट क्वेश्चन मार्क। सो बता रहा है देखो, सेट VLAN when the interface is in access। VLAN 3 बन चुका है ना, 3 के अंदर डालना है। मॉडल पुट switch port मोड में नहीं आएगा, put access and tab here। I will do exit, I will do interface pass 0/4 switch port mode, because I'm going fast, I'm not asking to switch port access। बस इसको एक्सेस करना है गाइस। VLAN जैसे हो जाएगा चेक कीजिए, VLAN बन चुका है। तो शो VLAN यार, यहाँ से निकल गया। अभी देखिए वर्चुअली आपको कोई स्विच लाने की जरूरत नहीं, आपने उठाकर यहाँ पे डाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। ऑल क्लियर? गिव इट थम्स अप, यस नो। Yes, ma'am. यस मैम। लेट्स सी द मिरेकल हैपनिंग नाउ। आई डोंट नो इट विल हैपन। लेट्स टेस्ट वेदर दिस कंप्यूटर्स आर एबल टू टॉक नाउ। ये जो PC 0 है ना, ये PC 3 से बात कर रहा था ना पहले, फेल्ड आ रहा है। क्लियर?
ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में था पहले, क्लियर? मतलब जस, किरण, हरिवंश, प्रतीक, तन्मय, हम सब एक साथ बात कर रहे थे, बट अब क्या हो गया, ये 16 लोगों को मैंने 8 में डिवाइड किया। 8 पीपल आर इन वन क्लासरूम, अदर पीपल इन अदर क्लासरूम। बात करना है, नहीं पॉसिबल है, डोर्स आर क्लोज्ड। दिस इज माय सेल्स डिपार्टमेंट, दिस इज माय आईटी डिपार्टमेंट। ऐसा कंपनीज में किया जाता है, क्लियर? Yes, ma'am. मैम अभी PC1 एंड PC2 ऑलरेडी अलग अलग VLANs में है, बट कैन वी Perfect. पुट देम इन अ कॉमन VLAN, लाइक जैसे OSPF में एरिया में डाला था, हम्म, वैसे ही PC1 एंड PC2 को हम VLAN 4 में डाल सकते हैं क्या अभी? ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि इनको मैंने VLAN 2 में ऑलरेडी डाल दिया, इसको मैंने VLAN 3 में डाल दिया, राइट? ओके, या चलो और एक VLAN बनाते हैं, VLAN 5, जिसमें मैं बोलूंगी ठीक है PC1 इधर आ जाइए, PC2 इधर आ जाइए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सेल्स का एक कंप्यूटर और आईटी का एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ बात करें, राइट? या कर सकते हैं, बट ये VLAN से निकल जाएगा, ओवरलैप होएगा। ओके। मतलब आप एक नया ही डिजाइन कर रहे हो, मतलब एक नया इंजीनियर आया, वो बोलता है हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये दिस इफेक्ट्स माय होल नेटवर्क, इनको कोई अलग VLAN में डाले, ठीक है? तो इफ यू पुट देम इन द न्यू VLAN तो बाय डिफॉल्ट पुराने VLAN से खुद निकल जाएगा वो। यस, ओवरलैप, मतलब ओवरराइड हो जाएगा। ओके। और एरियाज ओवरलैप होते थे, इधर डायरेक्ट ओवरराइड हो जाएगा। हाँ, राइट, बट आप देखो, थोड़ा नोटिस करो कि ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए, कुछ भी क्वेश्चन है पूछिए। सी 1 2 3, दिस इज ऑल डन। ये दो बाकी है, इस पे मैं आती हूँ, पहले ये समझा है वो मुझे बताइए। आइसोलेट कर दिया हमने फुल नेटवर्क को, क्यों नहीं? व्हाई दे आर डूइंग दैट? बिकॉज़ दे आर डिफरेंट वे। Guys, if you allow me, I will go one step ahead. अगर ये base clear है, creating the VLAN, adding the interfaces under VLAN, check if VLAN are created, and make sure that two different VLANs cannot talk with each other. Clear? यस। Yes, ma'am. Everyone, chat में observe करिए, 2 yes आया मुझे, बाकी लोग quick. Okay, more R is like more clear. Okay, okay, चलो कुछ नए words आ गए. Sure, yes, okay, let's go ahead. Fine. Now guys, ये सोचना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा दिमाग को और प्रोसेसिंग कीजिए, और ये देखिए, if switch has limited number of ports, अभी switch के पास 4 है, real world you have 24, 48, 52, limited है, पर आपके पास कंप्यूटर्स तो बहुत सारे होते हैं, isn't it? Do you agree that, guys? Yes. Okay. So देखो रियल वर्ल्ड में कैसे काम करेगा, ये आपके लैब्स में किया जाता है, आपने लैब देखा होगा ना, उस दिन मैंने स्विच बताया था, 12 कंप्यूटर है आपके स्विच के साथ कनेक्टेड, एंड लेट मी टेक वन मोर हियर। अब देखिए क्या होता है, दिस स्विच इज सेइंग हे आई हैव ओनली 24, बट सपोज यू हैव मोर 24 कंप्यूटर, दैट टाइम आपको स्विच तो बाय करना होगा, isn't it? Yes, ma'am. So see here, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करती हूँ so that we can just create a big structure just for showing. Now what happened? All 24 ports are utilized. And आपको लग रहा है ओ मेरा ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा है, मेरे पास और 50 कंप्यूटर्स है, ठीक है, तो आपको और एक स्विच बाय करना होगा. And that time guys what will happen is
जो आप ये कनेक्ट करते हो ना, वॉट एवर यू कनेक्ट फ्रॉम दिस स्विच टू दिस स्विच, ये जो लिंक होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रंक लिंक. क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So conclusion is 48 computers connected, 48 to increase the stability and design purpose के लिए which is better. So VLAN has been created. Ma'am, is that trunk, please? Sorry. The word is trunk. Yes. Let me show you. Guys, I'll suggest you थोड़ा go through कीजिए इसको और concept को strong बना दीजिए. Trunk port. Can you see? These switch port belong to and carry the traffic of more than one VLANs. It's a great advantage to carry the traffic of group of VLANs. आपने देखा होगा ना, अभी देखिए यहाँ पर. जब आपका VLAN 2 का पैकेट यहाँ पे जाएगा, देन दूसरा कौन सा कलर है मेरा? सपोज VLAN 3 का पैकेट जाएगा, ये स्विच पे रिसीव होगा और वो क्या बोल रहा है? ये दूसरा बिल्डिंग है, यहाँ पर भी हमने VLAN 2 क्रिएट किया है, यहाँ पर भी हमने VLAN 3 क्रिएट किया है. So I want all my traffic of VLAN 2, which is in another building, connected via switch. तो मेरे कंप्यूटर के साथ बात होना चाहिए. So if I want to make them talk, I have to connect via this switch because उसका space अलग है, building is different. So how this switch will understand कि VLAN 2 आ रहा है, 3 आ रहा है? यहाँ पर एक concept use होता है which is called as tagging. So that every packet को tags लगाया जाता है कि वो VLAN 2 है, 3 है. जैसे वो यहाँ पे आता है, उसको समझता है, okay, it is VLAN 2, let me send it here. It is VLAN 3, let me send it here. Are you getting me? So let me connect this first. Guys, hope all are awake. You are not sleeping. I'm awake. Yes, It's for your benefit. Should be helpful for you. Take this. अब देखिए, what I'm planning is, सेम कलर. सेम कलर मीन्स ये भी एक VLAN 3 का पार्ट है, बट ये साथ में नहीं है. ये मेरे कैंपस एरिया में ही कोई और बिल्डिंग में कनेक्टेड होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, कनेक्टेड है दूसरे बिल्डिंग में. मैं चाहती हूँ कि वो एक ही डोमेन के अंदर आए. I doubt anyone will sleep. Okay. It's like actually a compliment. Thank you for motivating me. Okay. Next is कहाँ पर गई? बिकॉज क्या है ना, देख नहीं रही हूँ आपके एक्सप्रेशन को. So just wanted to confirm. Perfect. Perfect. Guys, देखो pink is I'm just not writing again VLAN 2. समझ जाइए VLAN 2 में. तो मेरा एक कंप्यूटर VLAN 2 दूसरे जगह पर है, ये भी VLAN 3 यहाँ पर है. और मैं चाहती हूँ कि मेरे दो डिफरेंट बिल्डिंग्स में, देखो मैं इधर जस्ट एक बॉक्स बना के आपके आइडिया के लिए रख रही हूँ, बिल्डिंग 1 एंड दिस इज बिल्डिंग 2. मेरा कंपनी में न्यू जॉब लगा है, मुझे आर्किटेक्चर करना है. ठीक है, डन. ऑल गुड. yes, yes. तो मेरे पास एक रास्ता है गाइस. व्हाट आई कैन डू, पहले ऐसे होता था कि दो केबल्स लगाए जाते थे. एक केबल था VLAN 10 के लिए, एक था केबल VLAN 20 के लिए. बट टेक्नोलॉजी इज इवॉल्व. उन्होंने बोला इतने केबल्स तो फिजिबल नहीं है, स्विच को भी आपको मॉडर्नाइज नहीं बना सकते. यू हैव टू पे अगेन, यू हैव दिस ऑल लिंक्स एंड एक्सेस एंड कंसोल पोर्ट. ऐसा कुछ करते हैं कि एक ही केबल डाल देंगे और उसके अंदर हम टैगिंग लगा देंगे. सो VLAN टैगिंग मींस whatever frames are carrying, imagine कीजिए this is pink color. How I can tell you to imagine? Wait. Imagine this is pink color and this is your, अभी पूरा येलो नहीं है मेरे पास. This is your yellow color. That means pink means VLAN 2 and yellow means VLAN 3. Automatically यहाँ पे कलर दिया ना, रियल वर्ल्ड में टैगिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है. क्लियर? सो VLAN टैग्स है.
to identify कि इसको ये specific जगह पर भेजना है. All good? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. Let me show you something. तो मैं क्या करूंगी? I want to make this VLAN 2 and VLAN 2 मतलब यहाँ का कंप्यूटर टॉप. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? I have to give your identity. Just a second, guys. Let me erase this unnecessary squares. Just posting the link for you. Guys, if someone जितना भी मैंने लिंक भेजा है एक नोटपैड पे डाल दीजिए अगर पॉसिबल है and just send it to me so that I can put in the classrooms also. Guys, I'll send this. देखो मैंने आपको बताया network lessons paid है. So I have a paid यहाँ पर हम पूरा document I have downloaded and kept so you can take this. You can nicely learn मतलब मेरा होने के बाद भी आप अच्छे से इसको learn कर सकते हो. This is CCNA क्लियर होने के बाद आप एनकोर को क्लियर करते हो और उसके लिए आपको ये स्टडी करना पड़ता है. मतलब इमेजिन अगर आप सर्टिफिकेशन भी करना चाहते हो उसका कॉन्सेप्ट आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो. इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पे बताया मैनेजमेंट हेल्प डेस्क फाइनेंस सिक्योरिटी. बहुत सारे कंप्यूटर्स है. स्विच का मदद लीजिए एंड यू कैन डू दैट. नाउ सी दिस स्विच इज कनेक्टेड टू वन ग्लोबल स्विच कनेक्टेड टू राउटर एंड देन इंटरनेट. समझ रहा है? किसी ने तो पूछा था मैम यहाँ पे आप राउटर नहीं लगा सकते. क्लियर? Perfect. Look at very nicely explained. You can like take your time. कुछ चीजें आप मुझे सुन रहे हो नहीं समझा वापस जाइए इधर. देखो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर रिसर्च इंजीनियरिंग सेल्स. देखो one computer of research is on first, second is on second floor, one is on third floor. अब ये तीनों कंप्यूटर अलग अलग फ्लोर में बट आपको एक VLAN के अंदर डालना है रिसर्च VLAN. डाल दीजिए अंदर. बात करेंगे. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, these are like forum का question answers. एकदम quick troubleshooting Cisco VLAN configurations. Dynamic maximum मैंने बताया है आपको. VLAN configuration of Cisco IOS. Cisco IOS means अभी आप see this is all here. Just now आपने देखा, isn't it? Right? Yes. आपको notes चाहिए. You've missed anything. Go back here. I'm sharing. I don't have any problem. But इतना make sure कीजिए कि आप पढ़ रहे हो. Okay, you can give names also. See, VLAN 50. मैंने 2 3 दिया. मैंने name नहीं दिया. मतलब IT sales नहीं दिया. आप name दे सकते हो. Clear? Give that. आपने VLAN देखा. VLAN कैसे create quick revision. More access हो गया. Port हो गया. Fine. चेक कीजिए आपका output. Statistic check होगा. देखो. Always remember, once you do that, you can do show run. Show run करने के बाद you get all the script at one place. जैसे आपका कुछ error find करना है, you can do show run and check. Now see, और एक important concept. How configure trunk so that you can carry VLAN traffic from one switch to another. Perfect. वो हमारा next है. BTP trunking, troubleshooting, VLAN trunking port. ये है BTP. BTP पे नहीं आते अभी. VLANs configurational switch. This is like a lab, small lab.
a moment guys. These are like troubleshooting, मतलब आपको क्या क्या problems आ सकते हैं in your errors or whatever, तब आप कैसे करोगे. These are like errors जब आता है आपको fine. VLAN trunking protocol. So also I don't know. Guys, what we did just now, मोड कौन सा किया था guys हमने, एक्सेस. नाउ आई नो एक स्विच का मेरा जो पोर्ट है, सपोज पोर्ट नंबर 15, I have to put that under trunk. Clear? नेक्स्ट में क्या करूंगी, दूसरा सामने वाला स्विच 2 पे जाऊंगी, उसको मैं ट्रंक के अंदर डालूंगी. क्लियर? ये वाला मुझे करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी हमने switch 1 and switch 2 के अंदर क्रिएट कर दिया है, which is whatever VLANs we have created. Once you do that, ट्रंक वाले कमांड सिर्फ स्विच लेवल पे एग्जीक्यूट करने, राइट? पीसीज तक जाना ही नहीं. नहीं तो नहीं, पीसी पे कभी हम लोग ट्रंक और ये नहीं लिखते, स्विच पे ही लिखते हैं. बट जब ये स्विच पीसी से कनेक्ट होगा तभी ये वाला जो इंटरफेस होगा ना जस्ट किरण, इसको हम एक्सेस लिखेंगे और स्विच के बीच में ये वाले इंटरफेस को हम ट्रंक लिखेंगे. क्लियर? यस मैम. परफेक्ट. नाउ सी, वंस यू डू दैट, उसको समझता नहीं है भाई करना क्या है आगे. सो I try to change the interface trunk with switch port bottom. Depending on the switch model, you might see the same error as me. If you want to change the interface to trunk mode, can you see here? Okay, ऐसा error आ सकता है. Then you have different options, like you have to do switch port encapsulation, because depending upon the switch model, वो बताता है कि ट्रंक तो करना है, बट ट्रंक ना डायरेक्ट नहीं हो सकता, आपको एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा विद .1q प्रोटोकॉल. कैन यू सी दिस? ट्रंकिंग जब भी करना है गाइस, थियोरी होता है उसके बैकग्राउंड में. ओके, रिमेंबर व्हाटएवर वी आर सीइंग हियर, ये हमने बेसिक देखा, क्रिएट रिस्पेक्टिव. नेक्स्ट इज व्हाट? कनेक्टिंग टू डिफरेंट VLANs. Not connecting to different VLANs, connecting same VLAN but in different, with the help of different switch. अगर ऐसा करना है आपको, सेम VLAN को कनेक्ट करना है, मतलब VLAN 2 and 2, बट वो स्विच के बेसिस पे डिवाइड हो गया है, then you have to tell that hey there is VLAN trunking protocol. Okay, दो प्रोटोकॉल्स होते हैं गाइस. एक होता है ISL which is Cisco proprietary. Okay, 30 bytes का इंफॉर्मेशन होता है उसमें. एंड सेकंड इज 802.1q which is open standard. मतलब पहले सिस्को का ही था, बाद में उन्होंने ओपन स्टैंडर्ड कर दिया. क्लियर? तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है. इस प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए यू हैव, इस प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए यू हैव टू राइट लाइक दिस, ट्रंक एनकैप्सुलेशन. ओके, एंड डॉट अबाउट 1q. स्विच 1 में भी लिख दो, स्विच 2 में भी लिख दो. परफेक्ट. आफ्टर डूइंग दैट, चेक एनेबल हुआ या नहीं, and then as you see the trunk acceleration is now 802 point, and जैसे आप लिखोगे ना ट्रंक मोड, आपको एरर नहीं मिलेगा. क्लियर? एंड देन यू पिंग from one computer to other computer. Is this clear? Let us do that. Perfect.
Shall I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We have last 5 minutes. Let's see if we are able to do it. I was on the switch. Switch का जो इंटरफेस है मुझे चेक करना है. Five. One, 2, 3 and 4. एक बार IP एड्रेस भी देख लेती हूँ. कंप्यूटर इज नॉट हैविंग आइडेंटिटी तो बात ही नहीं होगा. 0.5. And these PCs should also be under the same network, right? Yes. Okay. You can put any other also. Okay. But two different network को अगर बात करना तो टेक्नोलॉजी चेंज होते जाएगा. Okay. Right now we are doing what? मुझे 10 का एक पूरा ब्लॉक मिला है. ठीक है. जो मेरे ISP ने मुझे बोला है कि ठीक है 10 का ब्लॉक ले लो, which is a private address, फ्री है, प्रॉब्लम नहीं है. मैंने पूरे 10 ब्लॉक को सबनेटिंग किया है. समझ गए? Yes, ma'am. ये एक केस वन है. अलग अलग केसेस आएंगे. यू विल डील विद लॉट ऑफ डिफरेंट केसेस. सो अभी मैं पूरा एक को लेकर, बिकॉज क्या होता है 10 है तो सब ये सब इतना कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं कि डायरेक्ट बात होना चाहिए था, बट हमने VLANs के अंदर डाला. सो इज नॉट एबल टू टॉक. 1 2 3 4 5. 5 इज डन. आई एम PC 6 आएगा यहाँ पर. रियल में क्या आएगा? इस 10 है तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बात होना चाहिए, बट हमने VLANs के अंदर डाला तो इट इज नॉट टॉकिंग. नाउ perfect. Let me open the switch here and एक बार चेक कर लेती हूँ स्विच का मेरा कौन सा इंटरफेस है. अकॉर्डिंग टू मी 0/5 है. You see here? This is 0/1 and this is 0/5. 1 2 3 4 तो आ गया 5. What I'll do guys? बताना पड़ेगा है. इंटरफेस बताना पड़ेगा. दैट ओके. इंटरफेस FA 0/5 जो है उसको मुझे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में चाहिए. क्वेश्चन मार्क डाला तो पूछ रहा है कौन सा चाहिए आपको. से ट्रंक. ऐसे मैंने ट्रंक डाला. अप डाउन फिलहाल के लिए हो गया. सामने वाले को भी कर देती हूँ ट्रंक. एबल कॉन्फी इंटरफेस. क्या उसका इंटरफेस? पास 0/1. नो ओवर कॉन्फिडेंस. कंफर्म कर लो. ठीक है. सामने वाला स्विच है गाइस. स्विच टू. यहाँ पे देखो, यू विल सी हियर स्विच ओनली बिकॉज़ होस्ट नेम इज नॉट गिवन. आपके दिमाग में रखिए पहला वाला स्विच 1 है, ये स्विच 2 है फिलहाल के लिए. ऑल गुड. स्पीड इज ओके. स्विच पोर्ट मोड कोई पीछे नहीं रह गया ना. कुछ करना नहीं, ऑब्जर्व करना है. परफेक्ट. मिनिमाइज कर दिया. सब कुछ ठीक हो गया है. बस चेक कर दी.